सीता समारोपितवामभागं पाणोर्महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं। हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे आनंद दुर्गमे पतिवन्दस्य स्खलद्वादगतिमो स्वकृपादृष्टिदानेन सन्तु अवलम्बनं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद 58 अध्याय श्लोक 2 10th कैंटो 58th चैप्टर टेक्स्ट 2। दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वरम् उतस्तु जुगपद्वीरः प्राणामुख्यमिवागतम् दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दम् अखिलेश्वरम् उतस्तु जुगपद्वीरः प्राणामुख्यमिवागतम् दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वरम् उतस्तु जुगपद्वीरः प्राणामुख्यमिवागतम् दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वरम् उतस्तु जुगपद्वीरः प्राणामुख्यमिवागतम् दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वरम् उतस्तु जुगपद्वीरः प्राणामुख्यमिवागतम् दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वरम्
उतस्तु जुगपद्वीरः प्राणामुख्यमिवागतम्। Anyone else? दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वरम् उतस्तु जुगपद्वीरः प्राणामुख्यमिवागतम्। हरे कृष्ण। दोस्त भक्त सज्जन बंध मातृबंध आपण मानक आमर ये भागवत कथा को स्वागत जना जाउछि। तेणु एटी कह जाउछि जेतेबेले पांडवगण देखिले जे भगवान मुकुंद पहुँची गले पृथांकर से पराक्रमशाली पुत्रगण तत्क्षणात उठी दंडायमान हेले। ठीक जेपरी प्राणवायु फेरिबा परे इंद्रिय गुड़िक कार्यक्रम हो उठती। सो वी वेलकम all the devotees to our Srimad Bhagavatam class. So today we are speaking on Srimad Bhagavatam 10th canto, 58th chapter, text 2. So as we have already described yesterday, text 1. So here yesterday we described how the Lord arrived at Indraprastha. गतकाली आमे कहूथिले किभली भाव भगवान द्वारकारु इंद्रप्रस्थ को आसिले। सो काली ए विषय आलोचना होता। वर्तमान ये द्वितीय नंबर श्लोक कह जाउछि जे व्हेन द पांडवस सॉ दैट द लॉर्ड मुकुंद हैड अराइव्ड दोज हीरोइक सन्स ऑफ पृथा ऑल स्टूड अप एट वंस लाइक द सेंसेस रेस्पोंडिंग टू द रिटर्न ऑफ द लाइफ एयर। सो इन द परपोर्ट प्रभुपाद महाराज से एठारे व्यवहृत जुग रूपकटी संपूर्ण पद्याकृति अटे। जितेबले एक व्यक्ति अचेतन थाए सेतेबले तार इंद्रिय गुड़िक कार्यक्षम न थांती। जितेबले शरीर मध्य को चेतना फेरी आसे सेतेबले समस्त इंद्रिय तत्क्षणात सजाग हो उठती एवं कार्य करने आरंभ करती। तद्रूप भाव में पांडवगण समस्ते तत्क्षणात दंडायमान हेले उत्फुल्लित होई सेमानक प्रभु श्रीकृष्ण को स्वागत करने। The metaphor used here is quite poetic. When a person is unconscious, the senses do not function. But when the consciousness returns to the body, all the senses spring to life at once and begin functioning. Similarly, the Pandavas all stood up at once, enlivened to receive their Lord Sri Krishna. So, here, आम जो गतकाली कथा को विश्राम देते आम से कथा बर्तमान आरंभ करवा। गतकाली आम कहते कि भाव में भगवान इंद्रप्रस्थ को आसी जाइछन्ति। प्रकृत में से स्थानटी से इंद्रप्रस्थ नाला सेटा खांडवप्रस्थ। yesterday we have discussed that Lord came from Dwaraka to Indraprastha. In the Bhagavatam it is stated here Indraprastha, but actually at that time it was not Indraprastha, it was Khandavaprastha. But later it became Indraprastha. और भगवान आसिया पर से इंद्रप्रस्थ परिणत हो गला। तेणु ये कथा आम गतकाली आम आलोचना करुले वी डिस्कस यस्टरडे दिस पॉइंट। सो व्हेन द लॉर्ड केम दुष्ट्वा तमागतं पार्थ। So in the Khandavaprastha they have made some, just like we in this building, we in this dham, Raghunandan dham, we have a temporary temple. It will be a very big temple as envisioned our Gurudev. Today is Guru Purnima, today is Vyasa Purnima. आज रोची व्यास पूर्णिमा तिथि गुरुदेव अनुसार आज तिथि पालन करा जाए। व्यासंकर आविर्भाव तिथि से तिथि आमर ये भाव में जो रघुनंदन धाम रही आम गुरुदेव चाहिए गोटे विराट मंदिर, किंतु वर्तमान गोटे छोटिया मंदिर रही बर्तमान से भविष्य में हम विराट बड़ मंदिर हम। सिमिलारली से भाव में आम ये जो खांडवप्रस्थ यहाँ इंद्रप्रस्थ परिणत हो गला। भगवान का जो ब्लेसिंग रही, भगवान का आशीर्वाद रही, कौन न हो पार, असंभव संभव हो पार। तेणु सो गोटे छोटिया भाव में टेम्परारी भाव में गोटे कैपिटाल होकर सब पांडव मान बसी से पांडव माने एंड इंक्लूडिंग देयर मदर एंड देयर वाइफ
Kunti Devi and Draupadi, they were there in that Khandaprastha. Tenu, when particularly here it is stated that Partha means the 5 sons of Pandavas, 5 sons of Pandu. एठारे पार्थ शब्द व्यवहार करा जाइछि एथुर हम जानिबा ए जो भगवान जतरा से पहुँचले ए अचानक भाव रे से पहुँचले आगुरु देई नथिले सूचना देई नथिले तेणु भगवान पाखरे आसी पहुँच गले साधारणतः व्हेन भगवान कम्स जेतेबेले भगवान आसंती तांकर पंचजन्य शंख को नाद करंती 5 जन शंख नाद करंती समस्त जानवे जो भगवान आसुचंती बेली 5 जन्य ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मो महासक भीमकर्मा वृकोदर जो भगवद गीता इट इज स्टेटेड दैट द लॉर्ड्स काउंसिल इज कॉल्ड 5 जन्य 5 जन ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय मीन्स अर्जुन काउंसिल इज नोन एज देवदत्तं Devadattang means given by Deva, the demigods, Devadattang. Evam Pondrang Dadmo Mahasankha, Bhima Karma Brukodara. Brukodara, Bhima, is very wonderful in his activities, and his counsel is known as Pondrang Dadmo Mahasankha. So, this Sankha, the counsel, plays a very important role in our Vedic way of life. आम वैदिक सभ्यतार ये शंखर बहुत महात्म्य रही तेणु साधारणतः जो भगवान आसती से शंखनाद करती तेणु ये कथार जना पड़ी फ्रॉम दिस वर्स इट इज अंडरस्टूड दैट द पांडवस वर नॉट प्रिपेयर्ड टू वेलकम द लॉर्ड. Had they been informed or something, in some way or other, they would have gone a long distance to welcome the Lord. यदि जानी था पांडव माने जो भगवान आसुचंती ताहले से माने बहुत दूर को जाइक तांको स्वागत करि थांदे किंतु ए श्लोक रु जना पड़ुची जे से मानकु भगवान चाहुथिले गोटे सरप्राइज देबा पई. The Lord wanted to surprise them, give a surprise to them. That's why they were not aware that Lord is coming along with his entourage. तांकर कौन तांकर जो पार्षद मान सहित जमती सात्विकी इत्यादि मान सहित आसुचंती से कहीं जानी नथिले तेणु जेतेबेले दे सॉ द लॉर्ड कमिंग दुष्ट्वा तमागतं पार्थ तमागतं पार्था मीन्स हियर प्लूराल बहुवचन कह जाइछि पांडव 5 जन युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये भाव में युधिष्ठिर एम जो 5 पार्थ पृथांकर पुत्र पार्था दुष्ट्वा तम आगतं पार्था मुकुंदम अखिलेश्वरम. When they see the Lord, they think not simply they don't think Krishna, they see Mukunda. The first bhava is तांकर प्रथम मनोभाव होची कौन हमर मुकुंद आसुचंती. मुकुंद, this word is very important. ये मुकुंद शब्द बहुत गुरुत्वपूर्ण माने each word has so many meanings are there, but here we can find 2 meanings in Mukunda. Mukunda means who can give mukti. Mukunda. Muku means mukti. He can give liberation. He can Mukunda mukti प्रदान करि पारंती. बा मुकुंद कहले मुक्ति को कुत्सित कर दे पारंती. Those who are not devotees of the Lord, those who are jnanis, they think their ultimate purushartha, the ultimate end of their life is to get liberation, mukti. जो मैंने भगवान को भक्त नुहंती से ये जो तांकर अंतिम लक्ष्य होची मुक्ति केमि प्राप्त हे भौतिक जगत रु मुक्ति प्राप्त हवा सेटा तांकर होची अंतिम लक्ष्य केमि मुक्ति प्राप्त हेबे. सो दिस इज कॉल्ड चीटिंग रिलीजन. एटा कहा जाए ये होची कैतव धर्म. कैतव धर्म
यदिओ मुक्ति बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड लिबरेशन ए भौतिक जगत ऊर्धरे किंतु दिस इज ऑल्सो चीटिंग रिलीजन इटा कैतव धर्म बिकॉज दे वांट लिबरेशन फॉर देमसेल्फ नॉट फॉर द लॉर्ड से निजपाई मुक्ति चाहते सो 2 टाइप्स ऑफ लिबरेशन दिस मुक्ति इज देयर ऑफ कोर्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति 5 प्रकार मुक्ति रही तेणु दोज हु आर ज्ञानीज दोज हु आर इम्पर्सनलिस्ट दे स्ट्राइव फॉर साजुज्य मुक्ति दैट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ मुक्ति मुक्ति जो 5 प्रकार मुक्ति रही सब निम्नतम मुक्ति हूँ साजुज्य मुक्ति सेटा हूँ सब निम्नतर मुक्ति एंड दिस साजुज्य मुक्ति इज ऑल्सो ऑफ 2 काइंड्स ये साजुज्य मुक्ति 2 प्रकार रही गोटे हूँ ईश्वर साजुज्य ब्रह्म साजुज्य दे मर्ज इन दी ब्रह्म दैट इज दी बॉडीली एफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड दैट इज कॉल्ड ब्रह्म बॉडीली एफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड ब्रह्म साजुज्य आउ अनदर साजुज्य हूँ ईश्वर साजुज्य मर्जिंग इन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड जस्ट लाइक मीराबाई मर्ज इन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड मीराबाई भगवान को शरीर में मिसी जाइए ये गोटे साजुज्य मुक्ति तेणु चैतन्य चरितामृत वर्णना कर ब्रह्म साजुज्य हईते ईश्वर साजुज्य धिक्कार टू मर्ज इन द इम्पर्सनल ब्रह्मन is okay but worse than that is to merge in the body of the Lord that is called Ishvara Sajujya. Anyway, those who are Brahmavadis, those who are impersonalists, those who are Jnanis, they think that the ultimate end is this liberation, to merge into the effulgence of the Lord, or the body of the Lord. They think that is the highest goal of one's life. से भावती अंतिम लक्ष्य हूँ भाव ये मुक्ति पाइबा किंतु भगवान का भक्त यहाँ हूँ गोटे नरक इट इज स्टेटेड बाय प्रबोधानंद सरस्वती कहते कैवल्य नरकायते दोज इम्पर्सनलिस्ट ज्ञानी माने तांकर अंतिम लक्ष्य बहुत कष्ट करी से प्राप्त होती अंतिम लक्ष्य को ब्रह्म मुक्ति प्राप्त होती किंतु भक्त मान यहाँ दिस इज लाइक हेल कैवल्य नरकायते दिस इज लाइक हेल because when you merge into the body of the Lord or when you merge into the personal effulgence of the Lord, you cease your activities. You don't have any activity. You can do some activity only when you have a body. जिते आपंकर गोटे शरीर रही से आप किसी करें. Now I am speaking because I am having a mouth and I am having a tongue. मोर गोटे जिह्वा अच्छी गोटे मुख थी कथा कही पार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम. But if you don't have body, then how can you speak? You cannot speak. You cannot smell. You cannot hear. You can only think of. Just like that is that is called sukma sarira. Sukma sarira means subtle body. That is our subtle body. Subtle body means consisting of mana, buddhi and ahankar, mind, intelligence and false ego. So those who have got liberated, they have not false ego, but that ego is also not completely pure. Ego is also not completely pure. But not false, but not completely pure. That is the difference. Anyway, ये जो रही मन बुद्धि अहंकार ये आत्मा सहित रही this mind, intelligence and ego that is there in our soul. आत्मा सहित रही. So when you get a gross body with that soft body or that subtle body, you will be thinking. You will be feeling, you will be willing, you will be, you have something, in this way you will have, just like in a dream.
जो भाव में आम निद्रा देखुचे बहुत कथा देखुचे आम कथा कहूचे चलुचे बुलुचे सब कुछ कि एक्चुअली आम किसी करूना बिकॉज वी हैव नॉट ए ग्रॉस बॉडी दैट इज ओनली सटल बॉडी in dream we are having only subtle body. So similar is the situation when one gets liberation. But this mukunda for the devotees, this mukunda its meaning is another is there. That is mukti को कुत्सित मुकुद मुक्ति को जो कुत्सित कर दियंती for them this liberation is like a hell. Devotees they think liberation is a hell. That's why the devotees don't pray for liberation. Just like Chaitanya Mahaprabhu, he said, "Mama janmani janmanishware." I don't want liberation. I may take lives of life, but bhavatat bhakti rahitagitvayi. But let me have causeless devotion for you. आपण प्रति अहितकी भाव भक्ति मोर हो एति भाव देवता डिवोटी मान प्रार्थना हो एटा. So Mukunda means for the devotees this mukti is ugly, just like Prabodhananda Saraswati said, it is like a hell. Kaibala Narakayate. So here the Pandavas, when they see the Lord, they think him as Mukunda. He is Mukunda. Mukunda means he will give mukti. That becomes ugly means it gives bhakti. Mukunda for the devotees it is bhakti. It is not liberation. It is bhakti. It is called bhakti. Bhakti pradhan karne Bhagavan Mukunda. There is one verse in Srimad Bhagavatam, 5th canto, 6th chapter I think. This is described by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. When Sukadeva Goswami was speaking about Lord Rishabdev. Lord Rishabdev, he is the incarnation of the Lord. Rishabdev होसंधि भगवान को जन अवतार तांका विषय उधर कथा को होसंधि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को. At that time Parikshit Maharaj was thinking that we see this Priyavrata Vansha, the dynasty of Priyavrata is very fortunate because the Lord came in their dynasty. Rishabdev भगवान आश्रय तांका कुलरे तेणु सेमाने बहुत धन्य. Similarly, Dhruva Maharaj, he saw the Lord himself directly. Bhagavan se darshan karte Dhruva Maharaj. So he is very fortunate. But we are unfortunate. Ame hoche hatavaga. That was the feeling of Parikshit Maharaj when he was hearing this narration of Lord Rishabdev. Bhagavan Rishabdev ka katha jeteବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ Parikshit Maharajଙ୍କ ଭାବ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ. Tenu Parikshit Maharaj, understanding this point, speaks this verse. Parikshit Maharaj मनोभाव जानिकी सुखदेव गोस्वामी यही श्लोकटी कही भागवत पंचम स्कंद 6th अध्याय 18 श्लोक यहाँ अच्छी से कहते राजन पति गुरु अड़ंग भवतांग जदूना दैवं प्रिय कुलपति क्वच किंकर भो अस्तु एवं अंगं भगवान भजतां मुकुंदो मुक्तिं ददाति करिचे स्मरण भक्ति योगम. The Lord can very easily awards liberation, but doesn't give devotional service. That is important. Rajan patir guru alam bhavatang jaduna. हे राजन हे परीक्षित भगवान तमर केतबळे जदुमानकर भवतांग जदुनांग तमर एवं जदुमान जदुकूल केतबळे से पति होगी रोचंदी केतबळे गुरु होचंदी केतबळे श्रेष्ठ देवता होचंदी केतबळे कुलपति होचंदी केतबळे तमर किंकर मध्ये हो जाउछंदी सर्वेंट हो जाउछंदी. लॉर्ड बिकम सर्वेंट ऑफ इज सर्वेंट. तांगे भक्त मान से किंकर हो जाती. बहुत सुंदर श्लोक अच्छी तृतीय स्कंद 2nd अध्याय आम से आलोचना करवा ना. तेणु यही भाव में किंकर हो केमी ना अस्तु एवं अंगम भगवान भजता मुकुंदो. मुकुंद शब्द इट इज वर्ड यूज. अस्तु एवं भगवान भगवान से भजता मुकुंद. दोज हु वर्शिप द लॉर्ड भगवान, दोज हु वर्शिप मुकुंद मुक्तिं ददाति करिचित. He easily gives liberation. से बहुत सहजरे मुक्ति प्रदान करांती किंतु करिचित स्म न भक्ति योग.
प्रदान करती नहीं, इतने सहज भगवान भक्ति प्रदान करती नहीं, and that is very important. So here it is stated that Sukadeva Goswami continued, my dear king, the supreme person Mukunda is actually the maintainer of all the members of the Pandava and Jadu dynasties. He is your spiritual master, worshipable deity, friend, and the director of your activities. To say nothing of this, he sometimes serves your family as a messenger or servant. This means he worked just as ordinary servants do. Those engaged in getting the Lord's favor attain liberation from the Lord very easily. But he doesn't very easily give the opportunity to render direct service unto him. भगवान को भक्ति प्रदान करवाटा भगवान एत सहज प्रदान करती ना ये आम जाना केते आमर भाग्य. From this we can understand how much fortunate we are. Because we are serving the Lord, direct serving, we have been given the opportunity to directly serve the Lord. भगवान को सेवा करिवार सुजोग हम प्राप्त होइछे. So how much fortunate we are. किते भाग्यवान हम एई आम जानि परिबा. भगवान एते सहज भक्ति प्रदान करती नहीं, बहुत सहजरे कौन मुक्ति प्रदान कर दियंती. तेणु another verse is there. That is in Srimad Bhagavatam 10th canto. It is where yes, it is while discussing this point, this verse in Jagannath Puri Dham, Mahaprabhu and Sarvabhauma Bhattacharya, they are discussing this point in Srimad Bhagavatam 10th canto 14th chapter. This is Lord Brahma's prayer. Brahmangar Pratana it rahichi. There also this mukti word is used. So there Sarvabhauma Bhattacharya was not able to utter this word mukti. That is described in Jagannath temple. Tatyanukampam susamikhyamano bhunjana evatmakrutam vipakam hrudbhagavapurvir vidadan namaste jivetu jo mukti pade sadaya bhak. Here mukti pada is there. Mukti pada is there. So Sarvabhauma Bhattacharya, he is the incarnation of Brihaspati, the spiritual master of demigods. Today in observing Vyasa Puja, Guru Purnami, we observe all the spiritual masters. आज आम जो व्यास पूजा पालन करा तिथि ये समस्त गुरु मान पूजा करा जाउची. So Vyasa, when worshipping Vyasa, we worship all the spiritual masters. So by the arrangement of the Lord, this verse came. He is the spiritual master of demigods. He is an incarnation. Sarvabhauma Bhattacharya, a most intelligent person in the court of Prataprudra Dev, King Prataprudra Dev, Puri. So he has great fortune that Mahaprabhu came to him first. Mahaprabhu, when in the temple, Jagannath temple, Mahaprabhu saw the Lord Jagannath, the Lord showed him the form of Shyamsundar. There is a very detailed, I mean, a very long topic is there, but I have to cut it short because of time. Then when the Lord entered the Jagannath temple, the Lord Jagannath showed him the form of Shyamsundara. Bhagavan tanku Shyamsundara rupa darshan dele. Then when Mahaprabhu saw the Lord Jagannath, and he immediately ran forward to embrace the Lord. Bhagavan ko lingan karya pe dhaai gale Bhagavan, and immediately he fainted. So by good fortune, Sarvabhauma Bhattacharya was there. Sarvabhauma Bhattacharya said thile. So the Pandas of Jagannath, they thought him as a mad person. They wanted to bite him, to beat him. But Sarvabhauma Bhattacharya dissuaded them and took the Lord to his house. But he did not know that he is the Lord. Because he is the most intelligent person. He knows all the Vedas. He knows, से जानती सब कुछ वेद जानती, तांकर जो रही लक्षण से जानी पारे ही Mahapurusha.
तांकर लक्षण फ्रॉम हिज symptoms he could understand that he is a great person, he is a Mahapurusha. There are 32 symptoms in a Mahapurusha. महापुरुषर 32 लक्षण रही से जानीपारे. So my point is that by when the Lord, but still then he couldn't, even the Lord is with him, but still then he was not able to understand that he is the Lord, Supreme Lord. Because he was a Jnani. So Jnani, the point for them ultimate is mukti. Their antima lakshya hochi kemiti mukti prapta haba. So anyway, somehow there is a long discussion is there, long topic, but I have to cut it short. Mahaprabhu give mercy to him, Sarvam Bhattacharya, so that he could understand that he is the Supreme Personality of Lord Godhead. Mahaprabhu, he was in Bhagavan. महाप्रभु कृपारू से जानिले बहुत कथा रही भागवत चैतन्य चरितामृत वर्णना करा जाइछि. Anyway, after knowing that Mahaprabhu is the Supreme Lord himself, Lord Jagannath himself, so at that point this verse was came to discussion. This is in Srimad Bhagavatam 10th canto 14th chapter. This is a prayer of Lord Brahma. Here Lord Brahma says, Tatyanukampam susamikhyamano भुंजान एवात्मकृतं विपाकं रुद्रभागो पूर्वीर विदधन नमस्ते जीवे तो जो मुक्ति पदे सदाय भाग. मुक्ति पद, this word is there. When Sarvam Bhattacharya uttered this verse, he couldn't utter mukti pade, he uttered bhakti pade. He couldn't utter mukti pade. Then when Mahaprabhu heard this, that he altered the verse, then he said, why do you alter this verse? Why do you change the words? Now I am unable to utter this word mukti. ज्ञानी माने केवल चाहती मुक्ति से जानी सर्वम भट्टाचार्य शंकराचार्य धारा आसुँच शंकराचार्य धारा आसुँच अंतिम लक्ष्य हूँ मुक्ति प्राप्त हवा. किंतु महाप्रभु को कृपा जो प्राप्त हेले से मुक्ति शब्द उच्चारण करि पारले नहीं. मुक्ति को कहले भक्ति बोली कहले. महाप्रभु पचारे तमे कहीं परिवर्तन कल ना आई कैनॉट उटर दिस वर्ड मुक्ति. सो द मीनिंग इज दैट तथ्य अनुकंपा. दिस इज इट इज ए पर्टिकुलरली इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द डिवोटीज. भक्तमान पई ये श्लोकटी बहुत गुरुत्वपूर्ण 10, 14, 8. This verse is very important for the devotees. Here it says that भगवान को कहते ये होची भगवान का अनुकंपा. When we meet some reverses, when we find some difficulties, some problems, some dangers in our life, we should think that this is the Lord's grace. आम जानिबा कथा ये हूँ भगवान का अनुकंपा. अनुकंपा भगवान कर कृपा ये अनुकंपा. सुसमीक्षाण जदि आम ठीक भाव में समीक्षा करवा ठीक भाव में चिंता करवा ताले यहाँ बुझा ये भगवान कर अनुकंपा. कौन पई ना भुंजान एवात्मकृतं विपाकम. आम जो दुख प्राप्त होचे बा विपद प्राप्त होचे बा असुविधा जो प्राप्त होचे ये हूँ आमर पाप कर्मर फल. एवात्मकृतं विपाकम. आम से पाप कर्मर फल भोग करछे. हृदभाग पूर्वी विदधन नमस्ते. इन दिस यही भाव में जदि काय मन वाक्य आम यही भाव भगवान को सेवार नियुक्त हवा विदधन भगवान प्रणाम करी भगवान को सेवार नियुक्त हवा. जीवे तो जो मुक्ति पद सदाय भाग. somehow or other he lives in this way. he से मुक्ति पद रे पाया पई हकदार हब दाय भाग. आमर इन कन्स्टिट्यूशन आमर संविधान रे रही आमर अधिकार रही कर्तव्य रही अधिकार आमर ये सब अधिकार रही. भारत वर्षर नागरिक हेले आम या सब अधिकार प्राप्त हवा. किंतु समस्त चाहते अधिकार कम दियो आमर अधिकार आमर दाबी यहाँ दियो किंतु कर्तव्य को करने किए चाहती नहीं. So its meaning is that my dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him,
all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. This is our adhikar, it is our claim, adhikar. In our constitution also in India, we have certain duties and we have certain privileges, adhikar and kartavya. But no one thinks of doing the duty. They only demand, we should be given this, we should be given this, like that. They go on demanding. So here it is said, Jiveta jo mukti pata saibhag. So Mahaprabhu said, Mahaprabhu kahile tama kahin ki eta parivartana kala, e muktir artha mate bhakti. मुक्तिर अर्थ होते भक्ति मुकुंद मुक्ति कहले मुक्ति को जो कुत्सित कर दियंती दैट इज भक्ति मुक्तिर अर्थ मत भक्ति एही बड़ी भाव महाप्रभु also said that mukti means here also devotion. So this when the Pandavas जब पांडव माने भगवान देखुसंती भगवान को देखला बेले चिंता होसंती कोन तांकर भाव होची मुकुंद ये मुक्ति प्रदान करती भक्ति प्रदान करती कहा प्रदान करती मुक्ति व भक्ति न अखिलेश्वरम अखिल टू ऑल द पर्सन्स अखिलेश्वरम अखिलेश्वरम कहले सब किसी एंड नॉट ओनली ही इज मुकुंद ही होचंदी अखिलेश्वरम ही इज द कंट्रोलर और ईश्वर ऑफ ऑल अखिल सब किसी ईश्वर परम कृष्ण अखिलेश्वर सब किसी ईश्वर से तेणु से जो आज पर्यंत पांडव माने जो बड़ी भाव विभिन्न प्रकार दुख जंत्रणा आम गत काली कहते यहाँ दुख जंत्रणा भोग करके आसछंती भगवान चाहूले आउ एमाने ए दुख जंत्रणा भोग न करंतु ए दारिद्र्य भोग न करंतु तांकु सब किसी धन प्रदान करने आम गत काली आलोचना करूँ भगवान से आसछंती तेणु जो पांडव मान देखुं भगवान को से चिंता कर अखिल ईश्वर सब किसी नियंत्रणकारी तेणु आज पर्यंत आम जो विभिन्न प्रकार दुख प्राप्त होइछे विभिन्न प्रकार असुविधा प्राप्त होइछे ये मध्य भगवान को द्वारा होइछे अखिल ईश्वर से सब किसी नियंत्रणकारी एमती किसी नुह तांका नियंत्रण बाहर आम यहाँ प्राप्त होते भगवान का एम हूँ अनन्य भक्त सो हियर द वर्ड इज यूज दैट Akhileswaram. Akhileswaram means he is the Ishvara, the controller of everyone, everyone. So the Pandavas, their inner mood is that so far we have met so many difficulties, so many reverses, so many dangers, but it is by the control of the Lord. It is only by the wish of the Lord that we have got this. It is not that Lord could not control this situation. Lord controls this. So भगवान को देखिकी तांकर भावना होची अखिलेश्वरम 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 तेणु से भावनाटा I have to speak in English, that's why I have to search for the words. This is difficulty for me. So Akhila Ishvara means it is stated by Prabhupada Maharaj that he is the Lord of everything, or we may say he is the controller of everything. So far whatever difficulties we have got, we have got, that is it is by his arrangement. The Lord thinks in the devotee of the Lord thinks everything in this way. Just like I uttered this verse, Tatya Anukampa. This is pure devotee always thinks like this. Everything is by the Lord of the by the mercy of the Lord, by the wish of the Lord. Everything they think in this way. Pure devotee thinks in this way. So they are the pure devotees. So when they see Krishna, they think he is Akhileswaram. There is actually, I think there is not mention whether Pandavas have met Krishna previously. In Bhagavatam, there is no mention. But previously, it is mentioned that Lord knows about Pandavas. Lord knows about Pandavas, that's why he sent Akrura to Dhritarashtra. In 10th canto, 48th chapter, the Lord has sent Akrura to Hastinapur
to advise Dhritarashtra not to differentiate between their sons and Pandu's sons. तांकर पुत्र एवं पांडुकर पुत्र मान भितरे भेद न देखा भगवान पठे अक्रूर को तेणु पांडव माने भगवान को जो देखा करथिले बा कौन करथिले ए सब कथा वर्णना करा जाय ने कोड ही थाई पारे बट एनीवे व्हेन दे सी द लॉर्ड दे थिंक इन दिस वे इज मुकुंद अखिलेश्वरम से होसंदी लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग सब कुछ मालिक से सब कुछ कंट्रोलर नियंत्रणकारी तेणु इमीडिएटली उतस्तु जुगपद बीरा. So before seeing the Lord, they were sitting. It जना पड़ती from this verse we can understand. प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे. From this very word we can understand they are sitting when the Lord entered their court. बा जोटी भगवान से थिले सेठी जत भगवान आसुचंदी एई तो जना पड़ती उतस्तु. उतस्तु मेन से ठिया ही गले दंडायमान ही गले. He stood up. They stood up. That means before seeing the Lord, they were sitting. They may be doing something, they are discussing or anything. Because just they have come to this Khandaprastha, they have so much plan how to develop this, how to develop just like we are. We are very much busy how to develop this site as per our Gurudev's desire. से पर्यंत आमको जना नाला केमी कौन हम जमी रही पांडव मैंने सांगे सांगे से स्थान को आसछंदी तेणु से केमी डेभलप कर अनडेभलप्ड जगह डेभलप कर से विषय चिंता चलती किंतु दे वर डिस्कसिंग लाइक दैट व्हेन द लॉर्ड सेड दिस सॉ द लॉर्ड जो भगवान दर्शन कले सांगे सांगे उतस्तु जुगपद बीरा. उतस्तु मीन्स दे स्टूड अप से दंडायमान हो गले. जुगपद एक समय दंडायमान हो गले. जुगपद एक समय 5 जन जाक दंडायमान हो गले. बीरा देहा से ये बीरा बोली कह जाउची. वीर हु इज ए वीर. वीर मीन्स ये कह जाउची क्षत्रिय दे आर नोन एज वीर. शौर्य शौर्य मीन्स वीरता. शौर्य सूर्य जो माने क्षत्रिय से वीरता रही. वीर शौर्य तेज भगवद गीतार कहुई वीर. वीर मीन्स कौन युद्धे चापी अपलायनम. युद्धरे से पलायन हे ना. ये वीर कर्तव्य हूँ यहाँ. वीर ड्यूटी हूँ स्वभाव हूँ यहाँ. वीर से सहीबे कौन दे विल bear all the difficulties. They are bear. They are here in Srimad Bhagavad. I mean in English, the Lord say Prabhupada Maharaj says here. Of course, Prabhupada Maharaj has not given the purport. His disciples have given. Here it is said that heroes, they are hero, just like hero of a film. जमती गोटे सिनेमार हीरो रही भाव में ही कैन डू एनीथिंग हीरो. बट हियर दे आर रियल हीरोज. एमाने होसंदी प्रकृति वीर. कहीं वी सी आचार्य मैंने कही से विल सी दैट वीर कहीं कहुई. सो दे आर एड्रेस्ड हियर आर वीरा. दे आर हीरोज. द पांडवस फॉर पांडव उतस्तु जुगपद immediately all at the same time all of them stood up. Jugapad, the word Jugapad is used means at a time, at the same time all the Pandavas stood up from their chair or from their throne, whatever they may be, they stood up same time. So this example is given how we can understand same time, because this example is given prana mukhya vibhagatam. Just like a person is dead. A person is dead when his senses come back. His senses are there. His senses are there means nose, nostrils, all these 5 working senses, 5 knowledge occurring senses. These senses are there. But the pranavayu has stopped. Pranavayu means this. There are 10 types of air in our body. So among them, 5 air are very important. Pranavayu.
Prana, apana, vyana, dhana, udana, like that. There are 5 airs. Panchati vayu rahichi, that is very important. Prana vayu. It is because of this prana vayu that we exist or we breathe. When a person is dead or alive, it should be understood from nose. Nose, when Mahaprabhu became fainted, at that time Sarvabhauma Bhattacharya was finding out whether he is alive or not by putting some cotton on the nostril of Mahaprabhu. ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲୁନଥିଲା, ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁଳାକୁ ରଖୁଥିଲେ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ହଲିବ, ଯେହେତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣବାୟୁ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦିସ୍ ଏୟାର୍ସ, ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଦାନ, ଉଦାନ, ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, these 5 airs are very important, most important. At the end of life, that breathe, that one breathe, that is the last breathing of one's life. That is the last breathing. Last breathing. Prana prayana samaye kapavad pittavu. Prana prayana samaye. When the last breath goes out, it doesn't come again. Prana prayana samaye kapavad pittavu. It is that Mukunda Maharaj Sutra, that is there. So, when we breathe our last, we don't breathe, inhale again, that is our last exhaling. Seta our antima pranavayu, that pranavayu. So, when the last breath we have breathed, and that means he is dead. So, this example is given, prana mukhya vibhagatam. Mukhya prana, just then when again this pranavayu comes back, when pranavayu comes back, he becomes alive. Mukhya vibhagatam. Immediately like that. So, from this example we can understand these Pandavas were, though they were walking all these things, and when they see the Lord, they think that their life has come. They were lifeless, so to say. There is a very nice verse in Srimad Bhagavatam, 4th canto, 8th chapter, 9th chapter. This is a prayer of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, that is his feeling. Dhruva Maharajଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କଲେ, after doing austerity for a period of 6 months, he was only 5 years old. So by that time, he was 5 years and 6 months old. So when he saw the Lord, still then he was closing his eyes and meditating within. Within he was seeing the Lord. But the Lord took away his form from the heart of Dhruva. And when Dhruva did not see the Lord inside his heart, he became very much perturbed. So he opened his eyes. ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାବନରେ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଧ୍ରୁବ ଟିଲା, ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ସେ ସ୍ଥାନର ନା, ସେ ମଧୁବନରେ କରୁଥିଲେ। 6 ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଖି ବୁଜିକି ରହିଛନ୍ତି। So Bhagavan took away his form from his heart. So when Dhruva did not see the Lord in his heart, he became disturbed. So he opened his eyes. The person who was inside became outside. ଯେତେବେଳେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ। When he saw, he offered his prayers. In 12 verses, he offered prayers to the Lord. It is stated as Dwadasa Aditya. 12ଟି ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ Dwadasa Aditya. They are the sons of Aditi. They are the demigods, the chief demigods, just like Indra, Vivaswan, Arjama, Pusa, like that. They are ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଆଦିତ୍ୟ. So similarly, this is the essence of Veda in these 12 verses. ये होची वेदर सार। ये 12टी श्लोकरे ध्रुव को 5 वर्षर बालक got all the knowledge, all the Vedic knowledge revealed to him in his heart by the touch of the counsel of the Lord on his on his cheek.
and the cheek of Dhruva. भगवान जो ध्रुवर कपड़ को छुईदे शंखरे ध्रुवंकर सब ज्ञान आसीगला एवं से श्लोकटी कहते निजर अनुभव हो जो अंत प्रविश्य मम बात मीमां प्रसुप्तां संजीवयत्याखिल शक्तिधरश्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीमद्भागवतम 4th canto 9th chapter text 6. दिस इज फीलिंग अनुभव हो जो अंत प्रविश्य मम बात मीमां प्रसुप्तां आमे भावुचे आमे जीवित रहीचे किंतु एक्चुअली आमे डेड आमे प्रकृति मृत ये अनुभव आसला ध्रुवंकर से क्वेश्चन जो अंत प्रविश्य व्हेन द लॉर्ड एंटर्ड इन ही सॉ द लॉर्ड सो ही फेल्ट रेजुवेनेट से भाविले निजर जीवन प्राप्त हेले तेणु तांकर अनुभव हो जो अंत प्रविश्य मम बात मीमां प्रसुप्तां भगवान को दर्शन करने पूर्व से जो कार्य करुले जहाँ करुले ये सब डेड बॉडी भाई गोटे मृत व्यक्ति भाई तेणु भगवान को जो अनुभव कले से से जानिले प्रकृत में आम बर्तमान जीवन प्राप्त हलु जो अंत प्रविश्य बात मीमां प्रसुप्तां आम जो कथा कहे मम बीचम इमं प्रसुप्तां आम जो कथा कहे जो मैंने भगवान भक्त नुहति से कौन कथा कहते कौन कथा कहते कथा कहते ये भागवत में आरंभ कथा कहला सुखदेव गोस्वामी भगवान कथा कहूना लक्ष लक्ष कथा कहते भगवान कथा कहूना डेड बॉडी डेड लाइक जस्ट लाइक फ्रॉग गोटे कौन जीवा से दार्दरे एक पशुत जस्ट लाइक फ्रॉग कटकट 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 लाइक दैट सो इट इज ए फीलिंग ऑफ ध्रुव महाराज माय भाचम इमं प्रसुप्तां आमे आज भगवान कृपा प्राप्त होइतिबारु आज भगवान को नाम नौचे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे केते जन व्यक्ति भगवान को नाम उच्चारण करछन्ति प्रभुपाद महाराज गोटे कथा कहती प्रभुपाद महाराज से माँ तार पुओ कहते पुओ ता माँ कहते कौन ना सॉरी कौन हो ना देयर इज ए कार्टून से चैंट इसे तुम भगवान नाम जप कर ना मुझे करी ना there is a Bengali family. Prabhupada Maharaj gives so many Bengali examples. So one Bengali mother was there. Her son was a devotee. बेंगली माँ जड़े थे पुत्र जड़े भक्त थे तेणु पुत्र कहले माँ तुम्हें भगवान नाम बोलो भगवान का नाम करो हरे कृष्ण कहीकि बोलो अत कथा हम बोलते पारबो ना I cannot speak so many words. Prabhupada Maharaj says he uttered so many words, but he did not utter Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So similarly, it is a feeling. Jo anta pravishya mam bhat mim prasubdha. Prior to, we can understand this point. Dhruva Maharaj saw the Lord and he has his feeling, we have also feeling. Amar madhya se we are feeling rahichi. Can anybody guess what I mean to say? Ki kahi paribe kon mu kahiya pe chahuchi? Amar nijor ma anubhav rahichi. It is not that Dhruva was only amar abhishek ra madhya anubhav rahichi. Abhishek ra madhya anubhav rahichi. Everyone who has come to this Krishna consciousness, everyone has that feeling, that experience. जो माने कृष्ण चेतना को आसछन्ति समस्तଙ୍କର से अनुभव रहिछि. Can anybody say is one experience? ये कहि परिबे निजर अनुभव कृष्ण चेतना आसिया पूर्वरु एवं परे अनुभव difference between coming to Krishna consciousness and prior to that. Can anybody volunteer? You can. Now I will continue. You can. You have come to Krishna consciousness.
before coming to the church, I used to sleep very long. Okay. So after Krishna meditation, I used to wake up at Mangalarti to Guru Puja. Okay, right. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସମୟ ଶୋଉଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଇସ୍କନ ବୁର୍ଲାରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବହୁତ ସମୟ ଶୋଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା। ସୋ ହିଜ୍ ଫିଲିଂ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଶୋଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆସିବା ପରେ ମୋର ଏ ଶୋଇବାଟା କମିଯାଇଛି, ସକାଳୁ ଉଠି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଫିଲିଂ। But another thing, another point is, important point is, we chant this mantra, Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. This mantra we utter to our Gurudev. Today is Guru Purnima, so this is very important for this occasion. Actually, prior to coming by taking shelter of Guru, we also sing. So many things we are singing. I बहुत दिन से देखुतिले, किंतु आमे अंध थिले, आमर चक्षु उन्मोचन हेई नथिला। गुरुदेवंकर जतल शरण रे गले, गुरुदेव आमर चक्षु को उन्मोचन कले। एई चक्षु साहाय्य आमे देखुचे, आमर सीइंग इज डिफरेंट, आवर सीइंग इज डिफरेंट। आमे जो वर्तमान देखुचे, आमर देखिबाटा अलगा। भक्त हवा पूर्व से देखुंती किंतु तांकर देखिबाटा अलगा। से भगवान देखिपारती ना कौटी किंतु आमे सबुठी भगवान देखिबा, आमे देखिपारे आमर ये हूँ कृष्ण चेतना। कृष्ण चेतना हूँ ये आम सबुठी भगवान देखिपार, हाईएस्ट चेतना, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस भगवान को आम सबुठ देखिपार। सो सिमिलरली ध्रुव's feeling was like that. जो अंत प्रविश्य मम वात मिम प्रसुप्ता, prior to coming he was only 5.5 years old, बट जितेबाला भगवान दर्शन करने पूर्व तांकर जो एक्टिविटी सब होता से सब मन पकाउछंती, से सब मन पकईकि कहउछंती इट आई वाज लाइक ए डेड पर्सन प्रसुप्ताम, आई वाज कंप्लीटली asleep, प्रकृष्ट रूपेण सुप्त, कंप्लीटली asleep। वर्तमान मु अनुभव करछि जे मु वर्तमान जागृत होइछि। श्री श्री सीताराम हनुमान जी की वर्तमान में जागृत होइछि, वर्तमान में जागृत होइछि। जो अंत प्रविश्य मम वाच प्रसुप्ता संजीव होइछि अखिल शक्तिधर स्वधामना। ही हैज सो मच पोटेंसी, अखिल शक्तिधर स्वधामना, बाय हिज पोटेंसी ही गिव्स अस दिस बेनेडिक्शन, सो दैट जस्ट लाइक महाप्रभु सेज कौन तो कौन मु तुम आसी के तुम शोच हो। जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचेर कोले, एने औषधि माया नाशिवार। So I won't speak it, I will sing it. So Lord is our dearmost friend. That's why we are sleeping in this material world, in the lap of Maya. We are sleeping. Pisachira kole, Maya pisachira kole. We are sleeping. And Mahaprabhu comes to हमको उठे पाई, हमको wake up, wake up, wake up. Mahaprabhu comes. So similarly, Dhruva's feeling was like that. Sanjivayati, he felt that he is enlivened. निज जीवन प्राप्त होला बेले तांको लागिला संजीवयति अखिल शक्तिधर सदामना। अन्यास हस्तचरण श्रवण तो गादिन, like our tongue. Similarly, there are other senses also of ours. Hasta, charana, all these things are our hands, legs, all these things are there. Togadin, our skin, all these are. Prana Namo Bhagavate Purushaya Tubhyam. We may be breathing. We may say that we are breathing, so we are alive. No. एवं आम जदि प्राण निश्वास नौचे त्याग करते किंतु वी आर डेड। दैट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवत सेकंड कैंटो 3rd चैप्टर। आयु हरति कौन कौन तरभ कि न जीवंती वस्त्रा कि न शोषति उत दी व्हाट इज दैट कॉल्ड वस्त्रा इन दैट पर्सन
कुंभार जो माटी गड़ुची से गोटे रही ये बहुत जोर साउंड हो ब्रीदिंग हो साउंड हो किंतु इट इज डेड बॉडी कुंभार दैट इज नॉट लिविंग बॉडी सिमिलरली वी आर टेकिंग निश्वास ब्रीदिंग नौचे किंतु लाइक डेड बॉडी लाइक दैट सो एनीवे अन्यास्त हस्तचरण सर्वत्व प्राणान नम भगवते पुरुषाय तुभ्याम सो नाउ आई रियलाइज आई एम अलाइव prior to that though I was alive but now I realize that I was dead at that time. So this example is given here because there is time is short, that why I cut short my point. So actually that all the Pandavas, the 5 Pandavas immediately wake up and that means prior to that they were sitting. तेणु जो भगवान दर्शन कले मुकुंद कौन अखिलेश्वरम इमीडिएटली दे वोक अप दे स्टूड अप जुगपत वीरा दे आर एड्रेस्ड इज वीरा से माने बहुत वीर बा हीरोज जस्ट लाइक दिस एग्जांपल इज गिवन प्राणान मुख्य अवगतम. सो हियर द इन परपोर्ट Sanatana Goswami says, Akhileshwaram swagrihe agatam. Their feeling is like that he is Akhileshwara, he is Lord. Lord is not a small person, but he has come to our house. Swagrihe agatam. Sanatana Goswami gives this purport. Sanatana Goswami ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୃହକୁ ଆସିଛନ୍ତି. କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଭଗବାନ ଆମର ଗୃହକୁ ଆସିଛନ୍ତି. अखिलेश्वरमपि स्वगृहे आगतम मुकुंद मिति दर्शन मात्रेण एवं परमानंद प्रदानात्. मुकुंद सत्य जो पांडव मैंने जो देखुंट भगवान को मुकुंद चिंता कर कौन तर भाव हो कौन ना दर्शन मात्रेण एवं परमानंद प्रदानात्. भगवान देखिकी परमानंद से होती दे आर वेरी मच डिलाइटेड सीइंग द लॉर्ड. But when a non-devotee sees the Lord, he doesn't feel any happiness, just like a Kansa. When he was seeing the Lord, he was thinking him as a death personified. But the devotees, when see the Lord, they get so much happiness. It's said by Sanatana Goswami, Paramananda Pradhanat. Similarly, Partha, here the word Partha is used, that means Paitrushoseya tatrapi bhira. ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କର ଭଉଣୀ. ବସୁଦେବଙ୍କର ସେମାନେ 5 ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି. କୁନ୍ତୀଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 4 ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି. ତେଣୁ କୁନ୍ତୀଦେବୀ ଭଗବାନ କୁନ୍ତୀଦେବୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି. ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୁନ୍ତୀଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଦେଖୁଛ ଭାଗବତରେ କେତେ କଥା ସବୁ ରହିଛି, अन्यमान सहित रही कि नहीं भागवत वर्णना करा जाए नहीं. ये आम जाना जो कुंतीदेवी भगवान अत्यंत प्रियपात्री या सो पितृश्रेया तथापि वीरा से वीर बोली कहुच्छी. दे आर एड्रेस्ड एज हीरोज. सो व्हाट डू यू मीन बाय हीरो? Sanatana Goswami says the purport of Veera means Bhaktu Mahasamartha. Because they are devotees, they are having so much strength, so much Mahasamartha, they can do anything. Mahasamartha. Veera Artha we can understand this here, but this word we can understand what is Veera. खाली ओडिया वीर कहीदेले आम बुझीपार ना बा इंग्राजी हीरो शब्द शुणिले आम बुझीपार ना कि संस्कृत जब आम न कही था बुझीपार न था. सनातन गोस्वामी के अर्थ को बुझी जब न शुणी था आम बुझीपार ना वीर शब्दर अर्थ. सनातन गोस्वामी यहाँ कर पांडव मान जो भावनार भावना सेटा हूँ यहाँ बा सुखदेव गोस्वामी जो वीरा बोली संबोधन कर तार कारण हूँ ये भक्त. भक्त महासमर्था. भक्ति माध्यम कौन न करें पंगुं लंघयति गिरिं मुखं करोति वाचालं. कौन ए पर्सन हु डम पर्सन ही कैनॉट स्पीक बट ही कैन गो ऑन स्पीकिंग मुखं करोति वाचालं. and पंगुं लंघयति पर्सन हु इज लेम he can overcome the mountain. पंगुं लंघयति गिरिं महासमर्था. they are having so much strength. That's why Veera Shabda is used. Anyway, it's time already there, so I will conclude here my lecture.
जय श्रीमद् भागवतम की, जय श्री प्रभुपाद महाराज की, जय श्री गुरुदेव की, स्वामी गौर भक्तवृंद की, निधाई गौर प्रेमानंदे. You can chant a little. You can chant a little, Prabhu. Arjun, you can chant a little. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, राधा
कृष्ण देव की जय। श्री श्री सीताराम हनुमान